की रैली का आयोजन हमने किया कि लोकतंत्र बचाने के लड़ाई, इसीलिए इस रैली का नाम भी जो है वो लोकतंत्र बचाओ हमने रखा है। इस रैली को इसलिए रखा है कि आप चुनाव डिक्लेयर होने के बाद चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, आपकी टाइमिंग देखिए, आप चुनाव डिक्लेयर होता है तो आप चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हैं, चाहे वो झारखंड में हेमंत सोरेन हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल हो। तमाम हथकंडे आप जो है विपक्ष के लोगों को, ताकि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है चुनाव में उपलब्ध ना हो। आपका केवल और केवल फोकस जो है वो पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी का ओपोजिशन को डिस्टर्ब करने में, डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डिस्टर्ब करने में, लोकतंत्र की हत्या के लिए जो है आप इस तरीके के कुठाराघात लगातार एक के बाद एक विपक्षी दलों पे कर रहे हो, उसके खिलाफ इस रैली का आयोजन किया है। इस रैली में इंडिया ब्लॉक के तमाम सीनियर लोग को इसको संबोधित करेंगे ही। जयराम रमेश जी अभी डिटेल में भी बताएंगे कौन लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ी संख्या के अंदर जो है वो दिल्ली के लोगों की भागीदारी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भागीदारी और ऐतिहासिक रैली के रूप में जो है ये रामलीला मैदान में होगी, जिसको तमाम इंडिया गठबंधन के लीडर्स जो है वो इसको संबोधित करेंगे। और मैं समझता हूं कि इस रैली के बाद एक संदेश जाएगा कि लोकतंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुटता के साथ जो है इस सरकार का जो है मुकाबला करेंगी। अभी मैं सर से चर्चा कर रहा था तो मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अब मोटो केवल ये रह गया है कि पार्टी में चंदा, व्यापारियों का धंधा और ईडी का फंदा, ये केवल और केवल ये केंद्र की सरकार इस 3 मोटो पे काम कर रही है। और हम इनको कहना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी और इस लोकतंत्र को के साथ इस तरीके का प्रहार और उसको खत्म करने की जो कोशिश हो रही है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और कल ये पहली गुहार होगी, कल ये पहला आम जनमानस का जो है वो प्रहार होगा इस सरकार के ऊपर, तो हम इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। धन्यवाद। शुक्रिया बाबरिया जी और लवली जी। मैं कल की रैली के बारे में और कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। कल इसीलिए नाम रखा गया है लोकतंत्र बचाओ रैली। मुद्दा है लोकतंत्र को बचाना, मुद्दा है संविधान को बचाना। व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। दूसरी बात मैं कहूं, ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है। कुछ 28 पार्टियां इसमें शामिल हैं। सारे इंडिया गठबंधन, इंडिया जनबंधन, मैं बार बार कह रहा हूं ये गठबंधन नहीं है, ये जनबंधन है। इंडिया जनबंधन के सारे पार्टियां इसमें शामिल है। तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है। हालांकि हमारा सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं हो पाया पश्चिम बंगाल में, फिर भी कल तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। तो ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है, ये इंडिया जनबंधन की रैली है। इंडिया जनबंधन की दूसरी रैली है, पहली रैली नहीं है ये। आपको याद होगा मुंबई की शिवाजी पार्क में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति के बाद 17 मार्च को इंडिया जनबंधन की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी शिवाजी पार्क में, और सभी नेता, मुख्यमंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, सभी लोग वहां मौजूद थे। और वहां शंखनाद वहां से शुरू हुआ और आज कल दूसरा शंखनाद होगा रामलीला मैदान से। मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़ा मुद्दा, पहला मुद्दा यह है महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई। पिछले 45 सालों में
सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर और खास तौर से युवा बेरोजगारी का दर, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं आप देख रहे हैं, अमीर सुपर अमीर बन रहे हैं और गरीब और मध्य वर्ग वही के वही हैं। विकास का फायदा कुछ ही लोगों को मिल रहा है, पर विकास की कीमत करोड़ों लोगों को चुकानी पड़ रही है। तो बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण, ये पहला मुद्दा है जिस पर कल हमारे नेता बोलेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, एमएसएमई का विनाश, और जो बबरिया जी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा, जो किसानों पर अपराध किए जा रहे हैं, किसानों पर जो अन्याय हुआ है, किसानों को जो अपमान हुआ है, 700 किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन में, उस शहादत को नजरअंदाज किया गया है। चंदादाताओं का सम्मान हो रहा है पर अन्नदाताओं का अपमान हो रहा है। तो यह पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है, जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं, पर इनके अलावा कई मंत्री अलग अलग राज्यों में, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। चार्ज नहीं है पर गिरफ्तार हो गए हैं। ये एक षड्यंत्र है। तो ये एजेंसियों का दुरुपयोग, चुने हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गिरफ्तार करना बिना चार्ज फाइल किए हुए, ये बिल्कुल एक मानसिकता दर्शाता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सारे विपक्ष पार्टियां अपंग हो जाएं, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से अपंग हो जाएं, ताकि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में न हो। तीसरा मुद्दा है, हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला, पिछले 75 वर्षों में से सबसे बड़ा घोटाला हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर संविधान के खिलाफ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उसी की वजह से प्रधानमंत्री ने अपने वकील दोस्तों को भड़काकर सुप्रीम कोर्ट को अभी धमकी देने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो डर गए हैं 8,200 करोड़ जो चंदा मिला है। और मैंने बार बार कहा है, चंदा दो धंधा लो, हफ्ता वसूली, ठेका लो, चंदा दो और शेल कंपनी, ये 4 तरीके हैं, 4 रास्ते हैं। और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के रास्ते से बीजेपी ने चंदा इकट्ठा किया है, और उसके साथ साथ हमारे देश के प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ कर आतंकवाद हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया गया है खास तौर से, और हमें बार बार, कल रात को भी 2 और नोटिस मिले हमें। कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक 4 नोटिस हमें मिले थे, कल रात को 2 और नोटिस मिले हैं, और आज मैं नहीं जानता हूं और कितने नोटिस आएंगे, क्योंकि अभी तक केसरी जी के जमाने तक ही नोटिस आए हैं। उनके पहले भी कई कोषाध्यक्ष थे। तो यह तीसरा मुद्दा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा, घोटाला, घूस। चौथा मुद्दा मैं कहूंगा संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना और संविधान बचाना। संविधान खतरे में है। बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता कह रहे हैं
कि इस संविधान को वापस हमें लिखना है, यह संविधान का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, एक्सपायरी डेट हो चुका है, एक नए संविधान की जरूरत है। और जो संवैधानिक सिद्धांत हैं, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, ये सब खतरे में है, क्योंकि ये संविधान खतरे में है। तो साथियों, कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, कोई एक व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए है, लोकतंत्र के बचाने के लिए है। और सभी पार्टियों का योगदान है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी पार्टी, सब लोग कोशिश कर रहे हैं मोबिलाइजेशन के लिए कल। और हमें पूरा विश्वास है कि रामलीला मैदान, सिर्फ रामलीला मैदान में नहीं, पर रामलीला मैदान के आसपास भी लोग हजारों में मौजूद होंगे और एक प्रभावशाली संदेशा जाएगा लोक कल्याण मार्ग को, जो पहले रेस कोर्स रोड कहा जाता था, अभी लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है, कि उनका समय अभी हो चुका है। जनता उनसे छुटकारा चाहती है, जनता, देश की जनता चाहती है लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, निष्पक्ष चुनाव हो, और ये जो बार बार विपक्ष पार्टियों के खिलाफ बिना मतलब के राजनीतिक साजिश रचाई जा रही है, ये बंद करने का संदेशा जाएगा कल की रैली से। हमारे पार्टी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और बड़े नेता, वरिष्ठ नेता सभी मौजूद होंगे। मुझे जानकारी मिली है कि शरद पवार जी आएंगे, तेजस्वी यादव जी आएंगे, उद्धव ठाकरे जी आएंगे, सीताराम येचुरी होंगे, डी राजा होंगे, अखिलेश यादव जी होंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब होंगे, महबूबा मुफ्ती जी होंगी, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई एमएल वहां होंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन होंगे, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जी देवराज होंगे, असली लोकदल, याद रखिएगा, असली लोकदल के सुनील सिंह होंगे, और तमिलनाडु के 3-4 पार्टियां और केरला के 2-3 पार्टियां रहेंगी। कुल मिलाकर मैं समझता हूं कल 27 या 28 पार्टी के नेता रामलीला मैदान में मौजूद होंगे। डीएमके त्रिची शिवा आएंगे, स्टालिन साहब की जानकारी नहीं है, पर डीएमके होंगे त्रिची शिवा, और टीएमसी से डेरिक ओब्रायन होंगे। तो सारे पार्टियां जो पलटी के हैं वो पार्टी नहीं है, पलटी के हुए पार्टी एक तो आप जानते हैं जेडीयू, वो नहीं है, आरएलडी ने भी पलटी किया है, पर आरएलडी वो तो नकली आरएलडी है, असली आरएलडी तो हमारे साथ है। तो आरएलडी के संजय सिंह, सुनील सिंह जी होंगे, और हमारे ओर से मैं फिर से कहूंगा कांग्रेस अध्यक्ष जी, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी दोनों इस रैली को संबोधित करेंगे। शुक्रिया। अगर आपके कुछ सवाल हैं इस रैली के बारे में, बबरिया जी और लवली जी उसका जवाब देंगे। देखिए, मैंने जो कहा है, कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल गांधी जी वहां जरूर मौजूद होंगे, और भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वहां होंगे, पर जो मैं कह रहा हूं आपको, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। हो सकता है सोनिया जी भी वहां रहें, पर इन दोनों का बात मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो कल हो रहा है। So you've said that the rally is to save the constitution and democracy, but since elections are around the corner, do you also see it as a show of strength and unity for the India bloc and send out a message to the voters?
No, that was certainly the purpose of the March 17th rally in Shivaji Park. And that's certainly one of the purposes of the March 31st rally. We want to show a sense of solidarity and a sense of unity and a sense of collective purpose on these issues that I have mentioned. Number one, the most important issue, price rise, unemployment, worsening economic inequality. Second, the issue of electoral bonds, the big scam, the biggest scam in post-independent India, the electoral bond scam, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court, and the Supreme Court itself has now become the target of the Prime Minister and his friends. The third issue, the misuse of investigative agencies to arrest democratically elected chief ministers and other political leaders, including ministers in different states. And fourth, this determined assault on the Constitution to get the Constitution rewritten and redo the entire Constitution of which Dr. Ambedkar was the prime architect. These are the issues. So it is a Save Democracy rally. It's a Protect Dr. Ambedkar Constitution rally. एक मिनट हाँ. Yesterday night. So, can you please share the details from which department? I'll share it with you separately. सर ये क्या वजह है कि आप If we don't receive notices, I get surprised. Receiving notices is no longer a shocking or surprising development. In fact, if a day passes without getting a notice, you begin to wonder what is happening. सर आपको बार बार क्यों ये इस बात पे एम्फसाइज करना पड़ रहा है कि ये किसी व्यक्ति विशेष पे केंद्रित रैली नहीं क्योंकि है? आप लोग ये प्रचार कर रहे हैं ना, मैं इसीलिए बार बार ये कह रहा हूं, क्योंकि आप ही लोग प्रचार करते हैं ना, तो इसीलिए मैं इसका बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं. इंडिया जनबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं, और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए. हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली. मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग प्रचार करते रहते हैं कि ये एक पार्टी की रैली है, एक व्यक्ति की रैली है. ये रैली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है, इसलिए मैंने कहा ना, चुने हुए मुख्यमंत्री, मैंने आपको 4 या 5 मुद्दे गिनाए हैं, और एक मुद्दा जो जरूर है, हमें हेमंत सोरेन जी को भूलना नहीं चाहिए. हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी गिरफ्तारी हुई, और उस कब हुई उनकी गिरफ्तारी? जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश होने वाली थी. तो हेमंत सोरेन हैं, केजरीवाल जी हैं, कई मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में भी कई मंत्री हैं, झारखंड में मंत्री हैं, तमिलनाडु में मंत्री हैं, और कई नेताओं को निशाना बनाया गया है. तो एक व्यक्ति के नजरिए से कल की रैली को मत देखिएगा, लोकतंत्र के नजरिए से देखिएगा, संविधान के नजरिए से देखिएगा. जयराम जी जैसे और क्या कल्पना सोरेन भी बुलाए हैं, उनको भी बुलाए हैं आप लोग? सॉरी क्या? कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, क्या वो भी होंगी रैली में? चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड मौजूद होंगे. और सुनीता केजरीवाल, राहुल जी खुद गए थे, उन्होंने कल्पना सोरेन से मुलाकात की है, उनके घर गए थे रांची में. जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हम लोग रांची में थे, राहुल जी खुद गए थे और कल्पना सोरेन से वो मिले थे. कल जहां तक मेरी जानकारी है, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी कल होंगे जेएमएम की ओर से, और भी नेता होंगे, पर जो मेरे पास नाम है वो चंपाई सोरेन जी का नाम है. जयराम जी एक तरफ आप लोकतंत्र या संविधान की दुहाई देते हैं बचाने की, वहीं आज ईडी ने फिर जो है दिल्ली सरकार में एक मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनको नोटिस दिया है, और कल की जो आपकी रैली हो रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं ये उन नेताओं के लिए जिनको राज्यों में कोई पूछता नहीं है, जहां भीड़ देखते हैं भाषण देने चले आते हैं. देखिए ये तो आने वाले चुनाव बताएंगे कि कहाँ पे क्या क्या होगा, और अगर वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में या राष्ट्रीय नेताओं के बारे में इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, तो यही हमारी लड़ाई है कि किस
संस्कृति का डेवलप जो है वो देश की राजनीति में कर रहे हैं, और लाखों लोगों की भीड़ को जो है लीडर संबोधित करने आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में क्या असर होने वाला है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन से जो है अपने आप जो है समझ में आता है। Summons have been become a fashion in this government. Like sir has said कि जिस दिन जो है कांग्रेस को नोटिस ना आए उस दिन जो है हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों नहीं नोटिस आया। ऐसे ही जो है जब तक ये समन ना भें तब तक इनका खाना हजम नहीं होता। इनको लगता है आज ये ढूंढते हैं पूरा दिन कि कल किसको समन भेजना है। तो इट हैज बिकम अ फैशन फॉर दिस गवर्नमेंट। हाँ जी बोलिए। हाँ, टाइम क्या रैली का बोलो। हमने लोगों को सुबह 10 बजे का समय दिया है, 10 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि आप 11 बजे तक, 10:30, पौने 11 तक जो है आप लोग वहाँ पे आइए। सर वो तो हेलो, मान के जयराम सर 11 बजे मानकर चलेगा। जयराम सर दो तब तक सवाल। 2 और नोटिस आ जाएंगे हमें। जयराम सर, हाँ सर, जयराम सर 2 सवाल हैं कि पहला ये कि कल जो 2 नोटिस आए हैं उसमें क्या कुछ कहा मैं गया? आपको अलग से वो जानकारी अलग से दूंगा। सर एक सवाल है कि कल इंडिया ब्लॉक की इतनी बड़ी रैली हो रही है, इससे पहले सर बिहार में जो पूर्णिया सीट है वो उस पे आरजेडी ने कैंडिडेट ये उतारा। दिल्ली के बारे में, कल की रैली के बारे में। अच्छा, ओके, थैंक यू। अभी 11:15 को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्योंकि कुछ लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और उसके बाद में 12 बजे को बैठ जाओ ना यार, बैठ जाओ। और उसके बाद में 12 बजे पवन खेरा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज थोड़ा बिजी डे है। So much weight. Yeah, a little bit. Yes. Yeah. आपको looking younger. आपको देख के मैं भी इंस्पायर हुआ। How many times have you watched Kosar? Many times. Many times, right? Part of growing up. हाँ. यहाँ पे पेशाब करना मना है। कवाड़ी पेशाब करना है। We were not allowed to read film magazine. चोरी छिप के कहीं से पढ़ लिया। Mostly I would read with one hand. हाँ, Stardust. Sorry, I was very fluent in Czech, French, all these languages यार। लोगों ने कहा कैसे क्लासेस ले, तो मैंने मॉर्निंग शो जाते हैं। ये पता है, ये this is now going to become, इतने numbers आएंगे ना इस podcast of a different kind of रेशमा की जवानी। But I have a grouse यार with sacred games. Why did you leave it at a cliffhanger यार? यार ये उनको पूछो आप, वरुण ग्रोवर को, अनुराग को, उनको पूछो, वो लेखक हैं। आज मेरे को किसी ने बोला है कुछ, सरकार आने दे हम तेरे को दिखाएंगे, कांग्रेसियों ने मेरे को बोला। And I said what? So summary executions as soon as he's PM. Disclaimer, he's my batchmate. Who? Rahul Gandhi. Really? हाँ. Traitor! All of them are so scared to talk about Islam and the discrimination there. मतलब 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता जिनकी इतनी फटती है। सबने अपनी tweets. I want to remember this मुहावरा. So they don't have the guts because they know सर तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन हिंदुइज्म के अगेंस्ट कुछ भी बोल दो, और फिर जब हिंदूज वो तो है ही ना को गुस्सा आए तब कहें कि देखो ये आज ये नया इंडिया है। मैंने तो सर तन से जुदा के खिलाफ कहा था। Yes. कि सर तन से जुदा is mostly by people who are दिमाग सर से जुदा। They went overboard के generation after generation to stay in power, अपीजमेंट के इतने गियर चला दिए कि खुद ही नहीं याद रहा कि क्या क्या चालू किया हुआ है। 2014 में आई वाज एक्चुअली कैनवसिंग फॉर आम आदमी पार्टी, सो दैट्स वेयर इट स्टार्ट। चप्पल लाना जरा पिटाई। आप तो कह रहे थे आप बीजेपी सपोर्टर, मोदी सपोर्टर नहीं है। आई एम अ नोटा वोटर। तो मैंने अपनी बीवी से कहा प्लीज वोट फॉर केजरीवाल। यार वोट भी खुद नहीं कर सकते, वो भी बीवी को, मतलब हद होती है पेट्रियार्की की यार। Other than Ravina Tandon and Tip Tip, yes, who else? Come on, who else? I didn't realize that Ravina has such a cult following. नहीं, अब फाइनली आप एडिट में जो डालोगे वही होगा। एडिट नहीं होता कुछ भी, नहीं होता, more or less।
Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Thank you for watching or listening on whichever channel you are seeing this or hearing this, and also sharing it with people who you think will benefit from these conversations. My guests today are two people who you would know if you were on social media, and well, who isn't on social media. Ranveer Shori, a storehouse of talent, the adorable Balwant or Bunty of Khosla Ka Ghosla. And those of you who are pre-millennials would remember him in his avatar as a VJ. And of course, a whole host of roles he has played in Hindi films and shows on OTT platforms. But Ranveer, the actor, is someone who's very active on social media and interacts with many long-time users of Twitter, or now X, happily tweeting memes and sharp political comments. Joining us in the conversation is the very erudite Anand Ranganathan, who's not new to the ANI podcast. Scientist and political commentator Anand and Ranveer take no prisoners. Also joining us in the podcast is my colleague Ishan Prakash, who has a sharp take on politics and foreign policy matters. So let's get going. Thank you, Ranveer, at last on the ANI podcast. I'm so happy. Thank you for having me. This is like one off my bucket list. It was my dream to be in this room. Thank you so much. You know Anand, of course. Everybody Hello, knows Anand. namaste. So I'm so happy you're here together along with Ishan. So we're going to get the young opinions and the young input Oh, I from thought Ishan. that's what I'm here for. Oh, From nice. Ishan and Anand, you said. Ishan and Anand. Thank you. Minimal intervention. Young, yes. Minimal interventions. Between you. Young opinions, Khan. हाँ, ठीक है. हाँ. So, His age is the same as Rahul Gandhi, so he's also. No, I'm younger. Are you younger? You don't look a day older than 59, though. But that's young now. ना? अच्छा. That's and the 50s is youth icon, right? हाँ. Yuva Neta. हम लोग So तो मैं तो, infancy I'm a में. baby icon. So Ranveer, the reason you are more than just an actor, of course, I mean, we all have our favorite Khosla Ka Ghosla Of course. takeaway. And you became like the favorite for all of us since that day. Though you've done VJ, ये सब कुछ कर चुके हो आप. Yep. Khosla Ka लेकिन Ghosla is the gift that keeps on giving in my life. yeah. So, you know, I'm sure you want to like, मेरे को typecast मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुझे, I need to be known by something more than that. But for us, it will always be you. I don't know and- whether I should laugh or cry, but thank you. Yes, I guess. There's no escaping Khosla now. But that was milestone, है कि नहीं? That week, actually, they were a week apart. Two films, Khosla Ka Ghosla and Pyar Ke Side Effects. They both released a week apart, and it changed my life that week. I mean, it put me on the map. Since then, touchwood, I might have worked less in some years, but I've been doing steady work since then. So, thank God for that week. Yeah. How many times have you watched Khosla? Many times. yeah. Many times, right? Part of growing up. हाँ. Yeah. यहाँ पे पेशाब करना मना है. कवाड़ी पेशाब करना है. I think my favorite moment was when he That asks was mine. his, हाँ, what was yours? आपका नाम. So he says, is it Chironji Lal? He says, नहीं, पिताजी का नहीं, आपका नाम. क्या मेरा नाम? Vinay says that. Yeah. But you are Bunty. I'm Bunty. Huh. No, so this is Vinay's line. Vinay meets Parveen's character. Vinay Chiran- Pathak, no? Yeah, Vinay. Huh. So he plays the the agent, right? So he asks him, "आपका नाम?" He says Chiranji Lal. अरे आपके बाप का नहीं, आपका नाम. आपका नाम. He says चिरंजी. Can you ये कोई imagine? नाम है? But I think even Anupam Kher's role in this and their father-son banter was That dynamics. was so good. Yeah. It sort of encapsulated everything जो relationship होता है ना. in Middle class, in yeah. a middle class, Delhi, yeah. yeah, aspirational sort of Delhi. उस समय it captured it at that particular point so well. Yeah. And It wasn't that, you know, Bauji Peripona, it's not that relationship which was like not realistic, you know, in modern day life. But that was so cute. There were no cliches in it. Huh. That's In fact, that was the time when about 6 or 7 or maybe 10 films were depicting exactly what you said. I think Rishi Kapoor also came in one. Rishi Kapoor, Neetu Singh. I forget the name. Those of the must have film. been later. Khosla started Khosla actually the started. trend That of the trend started, Delhi-centric films. Oye, Bunty, Lucky, Oye. That was after. That was after. That also came after. Uh-uh. But yeah, like I said, the snapshot of that time. Thank you. Fantastic. Thanks, Nidhi. But when you saw the script pehli baar, so what was your reaction when you saw it? Because obviously it was away from the mold. I remember reading the script, shutting the last page, and telling myself, this is a perfect screenplay. I still remember it. So after Khosla was shot, it was stuck for a few years. Now the story can be told. At that time, we were told when it was releasing, "Mat bolna ke 2-3 saal ho gaye bane hue," because you know it affects the thing. But the fact is, after it got made, it got stuck for, I think, post production money and other stuff for a couple of 2-3 years. And we would meet as a team
all of us, Anupam ji, Baman, me, Tara, Parveen, Jaideep, Dibakar, we would meet, kind of keep the spirit alive, you know, and try and, okay, no, you call this one, you know this one, you know, like a group effort to get it out there. It went through all that. This after knowing that what is in the cans is really good. So, you know, knowing that something good is there and there's nothing you can do. And then finally when it came out, of course, everybody got redeemed, especially, you know, Dibakar and Jaideep, who are, you know, who are incredible. आप क्या builder है कि broker है? नहीं, party है कि broker. Even the That's a meme area, the area. I use that for Congress a lot. We are going to get into the politics of it also. Everything leads A lot of to people politics. use it for journalists though. Yes, we get trolled a lot with that. Congress party है या broker. In fact, your bio says that, na? Your, क्या था? Pin tweet. Oh my God. Friends, I'm going to read this out. So those of you who are not on Please Twitter, put the beeps in. those who are not on Twitter, so you need to open an account. I'm not like, this looks like a promo for Twitter, but anyway, X. Sorry. So this is what his pin tweet is. Friends with so many of you writing into me here on Twitter, it's not always possible for me to reply to each and every abuse. Please know that each and every one of them has a special place in my heart. I just like, oh gosh. You know, I think many of us have been following you since we joined X. Yeah. You know, it was like, and it's such a refreshing thing because you are so... you're so not politically correct. You are like, जिसको troll करना है, जिसके troll को उड़ाना है, जिसको memes लगाना है. I normally don't troll. I mean, unless it's like a national political figure or some like I will, like if for example, if I mean me and Anand, luckily we get along and we are on the same side of the whatever political fence. But say he wasn't. Science की तरफ से. Huh? Science की तरफ से. हाँ मतलब. Say he wasn't. Say if he writes something, like for example, Tessin I follow many people who I don't agree with. Correct. So if they say something, I will not start कि तूने ये क्यों बोला, तू ये. I don't do that. Because everybody has a voice. You say what you want to say. Let me say what I want to say. And that's the principle I go with. I mean, now, if I'm talking about like a, you know, maybe like a, say a Rahul Gandhi, then I mean, I might go like point a finger. That's a political view. That's not a trolling. Yeah, and the thing is, I am writing about because he wants to be the Prime Minister of my country. Yeah. If he stops doing that, I have no reason to write about him. We were in fact just today discussing this and it just came up and Ishan was like, if you're going to be speaking with Ranveer today, you've got to ask him about this. So I said, baithna mere saath and discuss. Remember we were talking about the culture wars and we were discussing this. Yeah, absolutely. But so Rahul Gandhi has been going in his rally and giving speeches about representation of essentially backward classes, castes, the lower castes and all, in the lack of representation in decision making. Backward but look at what he's saying. Na, he's mentioning कोई आपका कोई जो टॉप की जो whatever 100-200 कंपनीज है उनमें से कोई ओनर है, अच्छा उनमें से नहीं है, टॉप मैनेजमेंट में कोई है, अच्छा गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरीज हैं वो है. All these places cannot be filled in 10 years. Yeah. This goes back to the time when your party was ruling. Of course. So it's like basically अपनी ही मतलब मैं कहूँ I have farted in this room और मैं ही तुमको वो किसने किया है बताओ किसने किया है, but guy it's your stink. Absolutely. So why are you getting so aggressive? So my thing is, what is the conclusion though? What is the solution of what he's saying? See, what he's saying, pointed out things that there are issues over here कि ये C-suite roles में C-suite, the CEOs, CXOs, whatever, there is a lack of representation of backward classes. So so what do you do? And you're saying it in a very aggressive way. So what is the solution to this? Because you he have more says यार affirmative action. मेरा version सुनना है, मेरा solution again Since you मेरी tweeted, तो कोई सुनेगा नहीं, but my solution would be you cannot get rid of caste and class by going on talking about it. उसको बिल्कुल कहने ना उसका mention ही illegal कर दो, and then it's just a function of time. You for example now Mr. Gandhi is going on saying this. The reservation policies were inducted by his party and his forefathers, right? Now after 70 years of doing that, if you're still raising, तो मतलब वो 70 साल जो लोगों ने sacrifices दिए हैं general क्या कहते हैं category वालों ने, they are in vain. If 70 साल reservation करने के बाद तुम यही कहने वाले हो, तो 70 साल वो करके क्या फायदा हुआ?
So then let's rethink it. Maybe reservations should be on another basis then. Because obviously this is not working out. Yeah. Anand, what do you have to say to this? Yeah, so even I've got trolled because our favorite fact checker, who has a habit of truncating videos, uploaded one truncated video, and Yeah. this is the sign of the times. I think you've also had. नहीं मेरा कभी डायरेक्ट उससे पाला नहीं पड़ा, but I know what he does. Yeah. He's a Congress PR agency by omission. Three or four ways to look at it. I think one is, do we have a moral obligation to give reservations? Personally, I feel we do, but I personally feel they have to be time bound and they have to be precise, targeted. They were supposed to be time bound. That's written. In fact, Dr. Ambedkar said this, said. and this was reiterated by none other than the Chief Justice of India, that would be time bound. I think 10 to 30 years that was the case, but clearly, as you say, it's not the case. And increasingly now, including the BJP for the last 20 years, starting from when Mr. Kovind, the ex-president, was the of UP in BJP, many others, including the social justice minister of state currently of the current government, and the Congress, they want reservations in private sector because they're saying the reservations in public sector are not having their impact. So what I said was, if we have a moral obligation, then a nudge is the answer. That is, in the private sector, if the parties want, then you incentivize it. For example, that is the case for many women reservations in private sector as well, I beg your pardon. And so many other cases, and you give a choice. You give a choice to the private sector. Look, we will incentivize this. If you have reservations, then you will get this tax incentive, or so many other things, which is not what the parties want, which is wrong. Affirmative action wali jo baat hoti hai. Right. So that's my view. It hasn't changed for the last 6-7 years. That's what I thought. That I don't want to thrust my views on the private sector, but you can. People are giving incentives to private sector all the time. It's their choice. But sorry, but I'm going to slightly probe into this, which is, if it hasn't worked in the public sector after 70 years, what makes you think it will work in the private sector? Yeah, that's another debate, because politicians haven't made it work. In the sense that's what I'm saying. What the creamy layer. It's like in the film industry. I remember even, when the time of film magazines used to be there. At that time, I remember about maybe 20 years ago or something like that, reading this, how many producers, how many top actors, they are all Swarn Jati. There is no representation, and for a fact I know this is pre-social media, that for a fact I know that in the film industry, nobody sees tumhari zaat kya hai. Religion, caste, all this just doesn't matter. Just like in media, even though, or hospital. Do you think any of us, when we go to the OT, if somebody is wheeled in after an accident, क्या हम पूछते हैं कि डॉक्टर से कि भाई तुम्हारी कास्ट क्या है, मैं उसी हिसाब से करूँगा? But that was the one progress that we had made in this in the last 70 years, which is now being undone by Mr. Gandhi himself. I think we should just simply, like how the N word was blacked out in the US, the C word should just be like illegal to talk about, mention anything, and then just give it time. It's a function of time. If a system which is working properly, you give it enough time, it'll work. But for 70 years, you have tried doing this and it's not working, there's something not right, because fact is, it's just become a political tool now. It more than anything, it's just become that. On the N-word thing, interestingly now, the N-word has been completely appropriated by the blacks themselves. I mean, if you watch that they are the Pulp only Fiction, ones, they are the ones who use it freely. Yes. And I don't know if you are allowed It's by using it, saying bro. For just to say, or queer, or वो भी नहीं होना चाहिए था. I don't think that. I don't think so. Yeah, I don't. Their own community should not be allowed. But notice the how can you caste stop? thing. I mean, you are a free speech absolutist as well, right? I mean, you can't. I'm not as much an absolute. I think it comes with the responsibility. So वो जो जिसका किसका quote है वो, you are free to say what you want, but after saying whether you will be free, I cannot guarantee. Idi Amin ka. You have complete freedom of speech, but I don't think you have freedom after speech. Yeah. So after speech, what you say, that matters. But what about this free speech? This Natasha call. Freedom of speech ends where the problem of my sovereignty lies, right? कि उसको You didn't see my thing I put on? No, I haven't. Abhijit's post. Under that, I've put a Pinocchio thing. Na? मैंने देखा नहीं I'm not that kind of girl. But I think the government does act a bit silly. I mean, it gives,
prominence to such people who are a dime a dozen. I mean, you know, what she prominence? says is so Anand, do you ridiculous, it's illogical, irrational. क्या prominence? I know, उन्होंने तो but- अंदर entry बंद की है, क्या हाँ, prominence पर थी? क्यों की बंद यार? मतलब why? यहाँ पे है कि State if she's sharing a stage or she's getting funded by organizations that is reported and there's no confirmation of this, if it has connections with Pakistani security agencies, then you can't enter our shores like that. I think there has to be some sort of if the So government I if didn't there know is- about there's a direct connection between Yes. Pakistan So and there are some open source intelligence people who put out stuff of her linkages with the networks run by Ghulam Nabi Fai and all. Again, this is subject to more checks. But if there is an angle like that, then I think it requires some deeper sort of investigations by the government before people like this are allowed to come नहीं, into but our वो shows. तो I'm saying this tells you how dirty the politics in India is, that because now there's a Congress government in Karnataka, they've invited her. Apparently, this is what I read. Yes, that's- Yes, you're absolutely right. So Correct. this tells you how dirty the politics is in India, where national security and national interest becomes second to Yes. your own interests, the party's interests. Bhai, you remember the time when Yasin Malik was feted in Delhi and Sayyid Ali Shah Gilani and matlab I have seen Pakistan High Commission का उनका National Days होता था and as journalists we go there that we used to go there at least. I mean now अब वो होते ही नहीं है वो National Day celebrations और ना मीडिया को बुलाते हैं वो. But there was a time you'd go JKLF and people were I just invited. stopped on the day when I saw that Gilani walks in and the ambassador, the high commissioner, everybody just stops everything and जैसे कोई head of state आया है and हमारे country के ministers वगैरह उनके पास जा रहे हैं, ex chief ministers उनके पास जा रहे हैं बात करने के लिए to with Gilani and they're considered like so VIP. Many of us just walked out and never again attended their Appeasement. Yeah. वही है ना, appeasement. यही तो रोना था, यही तो सारे रोते हैं कि why this government, why Modi had to happen and why this big Shift had to happen. happened is because appeasement politics had reached breakpoint. I mean, And mind you, covering Pakistani interactions in Delhi or their press conferences, that's the work of journalists. We will continue to do that. But when you see separatists being actively fated, that is really objectionable. Can I feel. ask you a question? Yeah, sure. So you were there. You saw this at that time. This was part of the zeitgeist. You had separatists over there. We were actively talking to these people. The government at the highest levels was talking to people. Did that also distill down to the way journalists were thinking at the time? So many of us used to ask this, that why is this happening? Why are you talking? So the off the record briefings that we were with, that देखो ये हमारे लोग ही तो हैं. They are also Indian after all, and if we keep treating them as separate from being Indian, that means you are fueling, or we are all party in fueling that separatist tendency. So let us draw them closer to us, and the naive belief that the more you draw in a separatist, you soften the separatist. So one way of doing it is keep throwing money, bags of cash, which was given to them from both sides of the spectrum. And being soft towards them, उनके रिश्तेदारों को वीजा दे दिया जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, जो लंदन में बैठे पाकिस्तानी हैं. आंटी की जो मीम है ना, ये सब मिलके But this, क्या बताऊं? This, so you're saying that government मिली हुई the है. people, the नहीं, not that separatists, one, the other one. ये सब मिलके दुनिया बना रहे हैं. Okay. the separatists who were talking to, I mean, it wasn't clear that they were just playing journalists at that time. I mean, journalists were that easy to be influenced. Look, it depends on how you want to look. No, the journalists were not. I don't think journalists were influenced, because the journalists in many ways feel that if I was to talk about journalists as a big thing, everybody has their own personal biases, of course. Some of us were labeled as ultra-nationalists who would not engage with them. But I would not as a person. But ANI would have to. So we did cover the Charare Sharif falling, and we did cover all these events which happened, Mastgul and all, when he said, मैं सब कुछ जला दूंगा, राख कर दूंगा. We covered that. But anyway, Ishan, my point is, whatever is the political dispensation of the time, and then again a function of time, how long it's been there, will affect everything. Yeah. It'll affect what journalists, the way journalists think, the way filmmakers think,
the way what the public discourse is, it affects everything. For I always say this, like the government is like the parents. मैं क्यों why I am so against the dynast Congress is that when there should have been discipline inculcated, cleanliness, toilets, when all this should have been done post independence, all that didn't happen. Instead, what happened was one after the other, the focus remained how to keep this within the family. This is my biggest grouse, and it continues till today. I mean, is it in a democracy? For 4 generations, you have given prime ministers. Have the grace to sit out now, yeah. Let other people have the grace to do that. Meri family has been given the privilege and honor by this country for 3-4 generations to lead. Take a break. You can do whatever else you want. Sonia Gandhi sat out. But come on. No, but this is a great way to segue. This clarity is why I guess that you have so many fans as well. You showed this clarity also when you tweeted about the Ram Mandir. At that time, it was not a lot of people would come out on Twitter or come out on any other public space for that matter and acknowledge कि यार उनकी जो thought process है, it evolved, it changed. I think you were the first person of note I can think of who actually said that you thought of the Ram Mandir and Ayodhya. Your feelings were completely different. But Ishan, if you read it properly, it said that sacrifice, that even that time you sacrificed the Ram Lalla. Yeah. Yes. That's something that even at that time the feeling, and I think a lot of people will agree with this, and a lot of people agreed with that thing which I wrote also, is that time the feeling was yaar, for peace, if we don't do this also, it's okay, yaar. Let's have peace. Okay, I'm going to interrupt, sorry. For those who are not on Twitter, I'm going to read out what Ranveer had tweeted then. It was a note actually. He said, I was one of the many Hindus who were willing to sacrifice the temple at Ayodhya and have a monument or a hospital in its place just so we can end this long-standing conflict between communities. Today I feel ashamed that I was willing to sacrifice righteousness at the altar of peace, ashamed that I didn't stand up for Maryada Purushottam Sri Ram and his values. I was one of the many Hindus who was willing to sacrifice the temple at Ayodhya and have a okay. So this is what you had said. And I agree because I felt the same way. Guilt tripping that happens against Hindus by Islamists and people of other religions. कि यार इतना तुम लोगों ने किया इतना कि अब ये करना है. So it's basically classic guilt tripping. By who? By, as I said, by Muslims, by Islamists, because people are overwhelmingly ignorant about what goes on in their minds. They are able to exploit and say, look, we are absolutely pious and pure. You will never hear any discrimination or anything from us. These are the people who've been discriminated against, discriminating. So you are the ones who should be guilty. Classic case. नहीं तो आप Islamist का नाम लेते हो या who else did you say second? People of other religion basically. No, so I am saying this. I again pin the blame on the political dispensation. Why? Because अब आप देखो उसमें push and pull देखो. For example, अभी भी आप ले लो भारत जोड़ो यात्रा. You go to every region and say you are your own people. We believe in federalism. Your identity is your identity. But you call the yatra Bharat Jodo Yatra. So this is a classic pull and push thing which Congress has been using for decades to stay in power. And I mean the dynast Congress. Same thing happened with the Ram temple also. If you remember, जो पहले 48 में, whatever 47 में जो हुआ, that then after that it was the Congress government where the doors were opened. 86. Yeah. That was to placate the Hindus, ironically, because that was right after the Shah Bano judgment. उसके बाद अरुण नेहरू पे सारा blame कर दिया कि उसकी वजह से. So if you see, you will find this constantly with them to keep the